योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। के लिए जाना जाएगा और अनेक प्रकार की कला और साहित्य की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनेगा। इस विश्वास के साथ जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जापान के माननीय राजदूत और उनके साथ आए हुए सभी दूतावास के अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और आइए अब हम सब एक फिल्म देखें जो रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की खूबियों से हमारा परिचय कराएगी। With strong civilizational links between the people of the two nations, India and Japan share the common heritage of Buddhism and commitment to democracy. The bond between the two countries reached a new high with the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and the then Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, visiting each other's country, upgrading the strategic partnership. The friendship between the two great nations with remarkable cultural similarities has been further strengthened by the heritage sites of Kyoto and Kashi. International Convention Center at Varanasi is a shining example of bilateral and cultural cooperation which has been built by grant aid from Japan to create a platform for the cultural and social interactions. The design, philosophy and building form revolves around creating people-friendly spaces to nurture the spirit of sharing and caring, which has been a long-standing tradition of Varanasi. Multi-purpose grand entrance lobby connects dedicated meeting and conference rooms, which can be used as art gallery space as well for showcasing the city's talent. Multi-purpose pre-function areas enable and facilitate better organization and interaction among the guests. The convention center will host the contemporary needs like conferences and summits and serve the city's long ongoing tradition for Indian classical music, dance and theatrical performances. An international standard and acoustically well-designed auditorium with the capacity of 1200 seats with well-equipped stage to facilitate multiple act theatrical performances as well. At the same time, to ensure a technically sound building, the design incorporates high standards of sustainability, safety and universal designs. Kashi is considered the holy abode of Lord Shiva. Rudraksh is a symbol of love and a prasad of Lord Shiva to humanity. The convention center is aptly named as Rudraksh and therefore designed in the shape of Shivling, with 108 Rudraksh decorated along its facade. Rudraksh, Varanasi Convention Center, a new landmark to celebrate heritage, culture and friendship. रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत जापान की वर्षों से चली आ रही मैत्री का प्रतीक है और जापान के सहयोग से ही इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। तो इसके लोकार्पण के मौके पर जापान के माननीय प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने हमारे लिए एक संदेश भेजा है। मोदी首相、ご出席の皆様、ナマスカール、バルナシ国際協力コンベンションセンターの完成にあたり、日本国政府および日本国民を代表し、心よりお祝いを申し上げます。バルナシ市はインドの長い歴史と豊かな文化の中心都市です。日本との関係も深く、モディ首相も訪れた日本の古都京都市と文化学術交流が続けられています。バナーラスヒンドゥー大学と京都大学の大学間交流はその一例です。こうした特別な地位を占める都市に我が国の無償資金協力によって日印友好の証として国際協力コンベンションセンターが
建設されたことを大変嬉しく思います。細部にわたり高い完成度を誇るこのセンターは、日本企業が設計施工を手掛け、我が国の技術力を示す存在です。モディ首相自らが英知の象徴となるよう願いを込めて、菩提樹の実と名付けられました。このセンターが国際会議や文化芸術行事などの開催を通じ、緊密な日印協力の舞台として用いられ、日印友好の新たなシンボルとなることを期待します。我が国とインドは自由民主、法の支配といった基本的価値と戦略的利益を共有し、長い交流の歴史の中で非常に友好な関係を維持してきました。新型コロナの感染拡大により、現在は相互往来が困難になっていますが、जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।